Hare Krishna and Pranam dear devotees. So, welcome to our reading of Srimad Bhagavatam. और पता नहीं कितने महीने के लिए ये एक्टिविटी बंद रही. So, but all of us are very happy to be with Srimad Bhagavatam every day and नित्यम भागवत सेवा हम लोग शुरू करें. So, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. So, we'll just begin. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. Prabhu, your mic is connected. Oh, okay. Now it is better? Much better. Now it is connected. Okay. So we are starting chapter 17th today. और ये जो हमारा जो चैप्टर है, दिस इज आप देखिए कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से पहले कैंटो के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 19 और 20 ओनली. सो अगर हमारी गाड़ी बीच में ना रुकी होती तो अभी इस वक्त हम लोग दूसरे कैंटो के ऊपर होते. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ कार्तिक एंड देन बुक मैराथन, सो इट गॉट पॉज्ड. और इसीलिए अच्छी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए. वो एक बार रुक जाती है गाड़ी तो बड़ी मुश्किल है उसको दोबारा चलाने के लिए. तो ये पिछली बार जस्ट टू गिव ए बैकग्राउंड, तो जो महाराज परीक्षित हैं वो हम देखते हैं कि कैसे, उससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से धृतराष्ट्र घर छोड़ते हैं, फिर उनके छोड़ने के बाद किस तरह से जो कृष्ण है वो भी अपने धाम चले जाते हैं, और फिर किस तरह से जो पांडव हैं दे ऑल्सो रिटायर, और वो भी सारा राजकाज छोड़ के इंक्लूडिंग द्रौपदी वो सब जो है हिमालय पे चले जाते हैं. और उसके बाद पिछले लास्ट चैप्टर के अंदर वी रेड हाउ परीक्षित महाराज गोज अराउंड हिज राज्य टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग, एंड देन ही मीट्स अर्थ इन द फॉर्म ऑफ काउ एंड धर्मा, एंड हाउ धर्मा टेल्स ही स्टैंडिंग ऑन 3 legs, एंड हाउ जो कली है उसका जो प्रभाव है वो पढ़ना शुरू हो गया है. सो नाउ दिस इज द चैप्टर 17 चैप्टर कि किस तरह से जो इज कॉल्ड पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली. सो ये अब हम अध्याय जो है आज ये शुरू कर रहे हैं. Suta watch. 1 second. Give me 1 second. Take this. I'm sorry. Hare Krishna. Suta uvacha tatra gomithunam raja hanyamanam anatavat dandahastam cha vrishlam dadarshe nipra lanchanam.
Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sut Goswami said, after reaching that place, Maharaj Parikshit observed that a lower class Shudra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club, as if they had no power. Sorry, as if they had no honor. Sut Goswami said, after reaching that place, Maharaj Parikshit observed that a lower class Shudra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club, as if they had no honor. Purport. The principal sign of age of Kali is that lower caste Shudras, that is men without Brahminical culture and spiritual initiation, will be dressed like administrators or kings. And the principal business of such non-Kshatriya rulers will be to kill the innocent animals, especially the cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. So, okay, in the Bhagavad Gita 18 point, so main thing is कि जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि one second, what is happening? Okay, that the role of a administrator is to be done by the Kshatriya. क्षत्रिय जो है उनके उनमें गुण होते हैं कि किस तरह से राजकाज चलाना है। और जो लोग जिनके पास प्रपात लिख रहे हैं कि जिनके पास ब्राह्मणिकल नेचर नहीं है या उनकी स्पिरिचुअल दीक्षा नहीं हुई है, जिनको नहीं पता कि राजकाज क्या करना चाहिए, किस तरह से ब्राह्मणों से एडवाइस लेके और वो राजकाज करते हैं शास्त्रों के अनुसार, अगर उस तरह से नहीं करेंगे तो जो लोग शूद्र हैं अगर वो राजकाज करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो दे विल किल इनोसेंट एनिमल्स स्पेशली काउज एंड बुल्स who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. तो अगर हम अपने आप को वैश्य कहते हैं तो देन गोरक्षा, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि गोरक्षा कृषि वाणिज्य गोरक्षा। सो ये क्या है, एक वैश्य के लक्षण है। सो वैश्य डजंट मीन बिजनेसमैन, वैश्य आल्सो हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द काउस. So the owner, so they are saying as if they had no owners. So who's the owner? Owner are the Vaishyas. They are supposed to be the owners. In the Bhagavad Gita 18.44, it is said the Vaishyas are meant to deal in agriculture, cow protection and trade. Same, what we said just now. And in the age of Kali, the degraded Vaishyas, the mercantile men, are engaged in supplying cows to the slaughterhouses. ये डिस्कस हमने पहले भी किया था आई थिंक कि हाउ इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 2-3 एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड एंड हाउ द मेन मार्केट्स आर दिस यूपी बिहार, दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज द मेन हब फॉर दैट. सो एंड हाउ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं सो कॉल्ड बिजनेसमैन है बट इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग काउज they are exporting leather jackets and leather stuff. So everything is upside down. The Kshatriyas, अब क्षत्रिय क्या है? The Kshatriyas are meant to protect the citizens of the state, whereas the Vaishyas are meant to protect the cows and bulls and utilize them to produce grain and milk. तो जिस जीव को भगवान ने दूध देने के लिए और अन्न के लिए दिया कि बैल को लगा के खेत में हल जोत के अन्न प्रोड्यूस करें, हम क्या कर रहे हैं? उनको मार के उनके मांस का चमड़े का उपयोग करके जूते, बेल्टें, जैकेटें बना बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं. The cow is meant to deliver milk and the bull is meant to produce grains, but in the age of Kali, the Shudras class of men are in the post of administrators, and the cows and bulls, or the mothers and the father, unprotected by the Vaishyas, are subject to the slaughterhouses organized by the Shudra administrators. Go down, Prabhu. Hare Krishna. Okay. Yes. Go to the next. And anybody who wants to read can also raise the hand. Yes. Radhika Mataji, you want to read? Yes, Prabhuji, I'll read. Go ahead, Mataji. Please read. Prabhuji, if you can please read the shlok. Okay, Mataji. Vrisham Mrinal Dhavalam
मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानम पदाइकेना सिद्धांतम शुद्धादितम. Translation. The bull was as white as a white lotus flower. He was terrified of the Shudra who was beating him, and he was so afraid that he was standing on one leg, trembling and urinating. Purport. The next symptom of the age of Kali is that principles of religion, which are all spotlessly white, like the white lotus flower, will be attacked by the uncultured Shudra population of that age. They may be descendants of Brahman or Kshatriya forefathers, but in the age of Kali, for want of sufficient education and culture of Vedic wisdom, such a Shudra like population will defy the principles of religion, and persons who are religiously endowed will be terrified by such men. They will declare themselves as adherents of no religious principles, and many isms and cults will spring up in the Kali Yuga only to kill the spotless bull of religion. The state will be declared to be secular or without any particular principle of religion. And as a result, there will be total indifference to the principles of religion. The citizens will be free to act as they like without respect of sadhu, shastra, and guru. The bull standing on one leg indicates that the principles of religion are gradually diminishing. Even the fragmental existence of religious principles will be embarrassed by so many obstacles, as in the trembling condition of falling down at any time. Hare Krishna. Thank you, Madhi. So we can also see that we also don't know the principles of dharma. There are so many dharma at the there's Naitik Dharma, there is Dharma Shastra, there are different levels. And we are also contaminated by our own thought process. What is Dharma? And और इस्कॉन में आने से पहले, भक्ति में आने से पहले हमारे भी जो अंडरस्टैंडिंग है धर्म की बिल्कुल डिफरेंट थी, और हमें उसके ऊपर फेथ भी था. पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है धर्म प्रोजिता कहत्वात्र परमो निमरस्तरा सताम. So then we understand कि all of them were more or less cheating religions. और अगर हमें परम धर्म सीखना है, तो उसका गोल, उसका लक्ष्य क्या है? So many times we see, especially आजकल कि वो काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए there are many over enthusiastic men who want to save cows. So that is good, but we see their way of saving cows by killing those who are taking is not a very good way to do it, because understanding is very narrow. And ये तभी होता है कि जब जो ऊपर के जो लीडर है, so they do not understand dharma properly, and in a narrow fanatic way we try to implement it. तो इसीलिए लोगों की चेतनता बदलना ज़्यादा ज़रूरी है. और आप देखेंगे कि प्रभुपाद he didn't went after those who are killing cows, but rather he went after the consciousnesses those, ताकि जब हमारी चेतनता चेंज होती है तब अपने आप गैया के लिए प्रेम आता है, और जो हम कम से कम ये कार्य करना बंद करते हैं. और धीरे धीरे अगर पूरे भारतवर्ष में लोगों की चेतनता में बदलाव होगा तो अपने आप लोग गोहत्या करना बंद कर देंगे. बट क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर नॉट, दे डोंट हैव द क्षत्रिय भाव, दे डोंट टेक गाइडेंस फ्रॉम द ब्राह्मण्स. तो उसका रिजल्ट क्या है कि दैट अधार्मिक थिंग्स लाइक killing of cows or export of cow meat is promoted. And nowadays, even eating of cow meat is promoted in the name of liberalism. Like this. What is the difference between one animal and another animal? चिकन में भी जान है, काव में भी जान है. जो गोट है या शीप है वो भी जानवर है, और गाय भी जानवर है. तो जब उसका खा सकते हैं तो इसका खाने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्योंकि कोई ठीक से बताने वाला नहीं है और कोई ठीक से एनफोर्स करने वाला भी नहीं है. ये भी एक हम देखते हैं कि जब कोई क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो रूल करे. He doesn't just gives a guidance. He rules, through the sword. He tells this thing should be done, this thing should not be done. और वो हम देखते हैं आज समाज के अंदर
कि in way of liberalism, okay, everybody should be able to do what they want to do. Then कई बार हम प्रीतिवर्धन महाराज से सुनते हैं कि किस तरह से यूरोप में और अमेरिका में डिग्रेडेशन हो रही है, और हम अपने आप ही देखते हैं कि जब लोगों को अनरेगुलेटेड करते हैं, सो देन द रिजल्ट इज डिग्रेडेशन. Was it better for mothers and daughters to be uh, uh, bound in the home, or is it better that now those same daughters are going half naked in metro or making reels? So what is better? So we can see that when we come into unregulated life, it means degradation. You never go up, because everybody wants to experiment, everybody wants to be known. So all that if we want to see, तो we can see कि ना हमारे जो रूलर हैं, ना वो क्षत्रिय की तरह प्रहार कर पाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि अगर रूलर का मन भी है, तब भी उसको पता चलना है कि मुझे चुनने वाले यही लोग हैं जिनकी मानसिकता शूद्र की है ना, और अगर मुझे राज्य करना है तो मुझे इन लोगों को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग खुश नहीं हैं तो मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चूज नहीं किया जा सकता. लाइक दिस. सो हित होते हुए भी आप हित नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज द सैड पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी. लाइक जो बाइडन जब आए, तो वो जितने जो वहाँ के जो ब्लैक पॉपुलेशन है, क्योंकि वो कर्जे में इतना डूब गए एजुकेशन लोन के अंदर, ही वांटेड टू वेव ऑफ देयर एजुकेशन लोन. और वो इतना समृद्ध देश है कि उनके लिए वो 10-20 बिलियन डॉलर वेव ऑफ करना कोई मुश्किल बात नहीं है. बट क्योंकि वो सेनेट उनके हाथ में नहीं थी, ही कुड नॉट डू. Even the president of the most powerful nation of the world could not waive off the education loans of the black people. देखिए, है ना. So democracy so called has checks and balances, but the thing is कि uh, it it does not give power to the king or to the president to enforce what is good. Cannot enforce. This is the sad part when and of course this is a material good thing I am talking, but अगर हम spiritually good देखेंगे, they have no idea. So they are the leaders of our so-called countries. और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि the bull standing on one leg, क्योंकि इससे 16वें अध्याय में आया था कि वो बुल इन whose धर्म, वो कहता है कि मैं एक ही टांग पे खड़ा हूँ. तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें indicates that the principles of religion are gradually diminishing. So one thing is to see कि all three are down, only standing on truth. और अगर 12वां कैंटो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 25% by every yuga end the good qualities comes down. So Kali Yuga means, beginning of the Kali Yuga means 75% good qualities are gone. And even the fragmental existence of religious principles will be embarrassed by so many obstacles, as if in the trembling condition of the falling down at any time. Hare Krishna. Can you go to the next verse, Prabhu? Okay, next. Vrindavan Purandar Prabhu. Yes, Prabhu ji. हरे कृष्ण बोलिए। Hare Krishna. गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहताम विवत्साम श्रुवदनाम श्यामाम यव समीक्षतीम. So we scroll down. Translation. Although the cow is beneficial because one can draw religious principles from her, she has now rendered poor and calfless. Her legs were being beaten by a Shudra. There were tears in her eyes, and she was distressed and weak. She was hankering after some grass in the field. Purport. The next symptom of the age of Kali is the distressed condition of the cow. Milking the cow means drawing the principles of religion in a liquid form. The great rishis and munis would live only on milk. Srila Sukdev Goswami would go to a householder while he was milking a cow, and he would simply take a little quantity of it for subsistence. Even 50 years ago, no one would deprive a sadhu of a quart or two of milk.
and every householder would give milk like water. For a Sanatanist, a follower of Vedic principles, it is the duty of every householder to have cows and bulls as household paraphernalia, not only for drinking milk, but also for deriving religious principles. The Sanatanist worships cows on religious principles and respects Brahmanas. The cow's milk is required for the sacrificial fire, and by performing sacrifices, the householder can be happy. The cow's calf not only is beautiful to look at, but also gives satisfaction to the cow. So she delivers as much milk as possible. But in the Kali Yuga, the cows are separated from the cows as early as possible for purposes which may not be mentioned in these pages of Srimad Bhagavatam. The cow stands with tears in her eyes. The Shudra milkman draws milk from the cow artificially, and when there is no milk, the cow is sent to be slaughtered. These greatly sinful acts are responsible for all the troubles in present society. People do not know what they are doing in the name of economic development. The influence of Kali will keep them in the darkness of ignorance. Despite all endeavors for peace and prosperity, they must try to see the cows and the bulls happy in all respects. Foolish people do not know how one earns happiness by making the cows and bulls happy, but it is a fact by the law of nature. Let us take it from the authority of Srimad Bhagavatam and adopt the principles for the total happiness of humanity. Hare Hmm. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So this self-explanatory कि और हम लोग भी जो गैया का दूध पीते हैं, it is to get that so-called A2 milk or cow milk itself is so difficult. और उसमें से भी वो किस तरह से, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वो कि जो लोग है, it draws the milk artificially through artificial process. और प्रोसेस क्या है कि जो बछड़ा है वो दूध पिए, जब उसका पेट भर जाए, तो जो ग्वाला है वो उनका दूध और निकालता है, बट इन ए मैनर वेयर द काउ इज एबल टू लव द काफ एंड शी फील्स वेरी सेटिस्फाइड एंड देन शी डिलीवर्स मोर एंड मोर मिल्क. So this is the principle, and then through that milk we peer our everything is auspicious, whether we use it in the havan or the sacrifice or for our own drinking like this, है ना. So और ये हम देखते हैं कि जिन देशों में इतने सारी गैया है, पालते हैं, करते हैं, then we see कि their life are full of anxiety. ये शास्त्रों में लिखा है और सीनियर भक्तों से भी मैंने सुना है कि अगर घर में गाय होती है and if you just hug the cow, that whole your anxiety they take. And this was one of the thing the cow, the it brings so much auspiciousness in your home. सो हम और नहीं कुछ कर सकते, तो कम से कम जब हम जाते हैं गौशाला में, ट्रिप जाना चाहिए वहाँ गैया को, वी शुड ट्राई टू सर्व गाय, गिव हर चारा, यू नो, or those places who look after the cows in a proper manner, give them some donation. So because that brings auspiciousness for the whole society or whole earth, not just those who are looking taking care of them. Okay. Yes. Next, Prabhu. Okay. Who wants to read? Pinky Mataji? Yes, Mataji. अरुधा कार्तश्वर परीक्षदाम् मेघगम्भीर्या वाचा समारोपित कार्मुक. Translation: Maharaj Parikshit, well equipped with arrows and bows and seated on a gold rimmed chariot, spoke to him the Shudra with a deep voice sounding like thunder. Purport: an administrative head of killing like Maharaj Parikshit, with full majestic authority, well equipped with weapons to chastise miscreants.
can challenge the agents of the age of Kali. Then only will it be possible to counteract the degraded stage, and in the absence of such strong executive heads, there is always disruption of tranquility. The elected show battle executive heads as representative of a degraded public cannot be equal to the strong king like Maharaj Parikshit. The dress or style of royal orders does not count. It is one section which are counted. Hare Krishna. Hare Krishna. So the elected show bottle executive head as representative of a degraded public cannot be equal with a strong king like Maharaj Parikshit. The dress or style of royal order does not count. It's one's actions which are counted. So sometimes we hero worship the politicians or this or that. So then that's why it's saying here, it is their actions which count. What are they doing to promote dharma in the society overall? And one of the way to do is to protect the cows and the bulls. And one must have that from the authority. And like I said, even though the president or the prime minister may want to do it, but the structure of democracy is like that he has to please the Shudras, the lowest denominator in the society, to remain or to get re-elected. Like this. You have to please the everybody, then only you can do it. You cannot enforce a rule because you will be. So for that, you have to become a dictator. Like you see in China, they become ruler for the whole or for the Russia. But also that Putin has become, almost a dictator. But because they don't have Brahminical qualities, so सिर्फ प्रेसिडेंट की ड्रेस पहनने से या क्षत्रिय की पोजीशन लेने से आप क्षत्रिय नहीं बनते हैं. सो मेन थिंग इज कि आप एक्ट किस पे करते हैं. तो वो शास्त्रों के रहते हुए और ब्राह्मणों से एडवाइस लेके जब आप रूल करते हैं देन यू आर कंसिडर्ड क्षत्रिय, बिकॉज यू कैन एनफोर्स द गुड थिंग्स. जैसे आई थिंक अम्बरीश महाराज के राज्य में बोलते हैं कि देन एकादशी वाज एनफोर्स्ड. That whole so many rajas Ekadashi is enforced. That everybody has to. नगाड़ा पीटते थे कि I think it was Amrish Maharaj or I don't know if somebody else remember कि वो किसके बारे में भागवतम बताती है कि वो नगाड़ा पीटते थे और नगाड़ा पीटते थे कि कल एकादशी है और कोई अन्न नहीं खाएगा और जो अन्न खाएगा उसको दंड मिलेगा. Like this. So one may think कि वो हमारी इंडिपेंडेंस को कर्व कर रहे हैं, but thing is कि because the king he knows what is good for the praja. So he's taking decisions which may not, be pleasing to the praja, or many of the praja, but he enforces the law because he wants to spiritually uplift them. He doesn't just want to be a fanatic religious, but he want to promote. So that is only possible in a monarchy. Why monarchy was better? Because one could dictate something. And the best thing was because it is coming from a ruling family who's being trained there. और कल परसों मैं पढ़ रहा था तो प्रभुपाद was saying क्योंकि monarchs degraded, then people threw them away and brought this democracy with checks and balances. But the result we see overall is degradation. In every part there's a degradation. People's character, everything has got degraded. So this is the learning. With Shastra Chakshu, we can see things how they are rather than just becoming sentimentalist and hero worship, this ruler or that ruler. And इन सब के अगर हम देखते हैं, जिसे मैंने बोला, इसका सार यही निकलता है कि हम लोगों की चेतनता ठीक करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, ताकि लोगों की चेतनता बदले. जो गोहत्या कर रहे हैं उनको मार मार के कुछ नहीं निकलेगा. वो तो आप एक को मारेंगे 10 खड़े हो जाएंगे, और क्योंकि इट्स ए गुड बिजनेस, सो मेन थिंग इज कि हर जगह भगवान की जो शिक्षाएं हैं भगवत गीता की, उनका प्रचार करें ताकि लोगों की चेतनता में बदलाव आए और कोई भी गोहत्या करने से पहले कभी सोचे भी ना. सो इस तरह से हम जो गोहत्या है उसको रोक सकते हैं, और जो
धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं उनको धीरे धीरे वापस ला सकते हैं. हरे कृष्णा. सो thank you so very much. If anybody has a question or comment, we can take. Otherwise, we are already 3-4 minutes up. So, Hare Krishna, Prabhu. Hare Uh, Krishna. Hare, thank you so much, Prabhuji, for the class. Prabhu, I had one question or more of a thing that I wanted to confirm. In the last purport, Prabhupada writes that milking the cow means drawing the principles of religion in liquid form. So is this understanding correct that because the milk of the cow or the other products they are being used in the sacrifice, so this is one of the thing, or there are other things? How do we understand literally? Because more, yes, you can think like this also. But thing is ki cow plays a very important role in our in a re- in a Sanatan religion. She Right. has so much. She has so much role to play. It is one animals whose malmutra is also glorified. We will not find any other animal jinka malmutra bhi is supposed to be pure. So everything to do with cow is auspicious, and she is the symbol of purity and dharma, dharmic principles like this. So whether it is a milk or the malmutra or other ways, cow is beneficial, and how important role she plays, in 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 our daily practice of Sanatan Dharma. So whatever we use, we are milking the religious principles from the cow. और ये भी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जितने भी देवी देवता हैं वो सारे काव के शरीर में बसते हैं. हमारे शरीर में भी हैं, बट इन हर बॉडी दे आर देयर एज प्रिंसिपल्स. हर ईच पार्ट इज representative of a demigod, and if we worship and take care of the cows, then dharma की वृद्धि होती है. That is my little understanding. Yes, Hare Prabhu. Krishna. So thank you so very much, and I'm very grateful कि सब लोग आए और हम लोग आज से फिर से नित्यम भागवत सेवा शुरू कर रहे हैं. सो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि रोज जुड़िए और भक्तों के साथ मिलके हम ये भागवत आधे घंटे के लिए पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Prabhu. हरे Thank कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.